Hello guys and welcome back to another YouTube video. In this video we're going to talk about entry model. Okay, and इस वीडियो पे जो मैं entry model discuss करने वाला हूँ, this is one of the highest probability entry model for me. Okay, so when your entry model will work basically, if you understand your high time frame bias, this is one of the very important thing. Okay, अगर आपका हाई टाइम फ्रेम बायस बेरिस है एंड आप बुलिश सेटअप देख रहे हो, बुलिश एंट्री मॉडल फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज गोइंग टू हिट योर स्टॉप लॉस. ओके, क्योंकि आप हाई टाइम फ्रेम बायस के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हो, राइट. एंड कैसे हम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग का हाई टाइम फ्रेम बायस क्या है? उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि हाउ यू कैन नो योर bias basically for daily, weekly or monthly also. Okay, so if you go and watch my this video, okay, this concept makes daily bias so easy. External and internal liquidity concept, you'll understand ki how to frame your high time frame bias. Okay, and the second point is basically if you understand which day market will give high momentum. Okay, so if you guys have watched my this video, in this video I said if you use economic calendar, you will know ki which day market will give high momentum. Okay, so we know कि जिस दिन रेड फोल्डर न्यूज रहता है मार्केट में, उस दिन मार्केट में ज्यादा मोमेंटम आता है, ज्यादा वॉल्यूम आता है बेसिकली, राइट. So before watching this video on entry model, I'll highly recommend you guys कि go and first watch this external and internal liquidity concept ताकि आपको higher time frame bias का concept समझ में आए. And then watch this video how to do top down analysis and using economic calendar as a road map ताकि आपको समझ में अच्छे से properly आए कि कैसे entry frame करना है basically. Okay, so here you can see we have this one high time frame level mark and we have this drawn liquidity or buy side liquidity you can say. So you can see we hit this high time frame level, right? So we know once we hit this high time frame level, we can look for the buy setup, we can look for the long setup until we hit this drawn liquidity, right? So from this low to this high, we have this range to work with, right? हम लोग का ये हाई टाइम फ्रेम लेवल से ये डाउन लिक्विडिटी तक का एक अच्छा खासा रेंज है जहाँ पे हम लोग एक एंट्री फाइंड करेंगे एंड वी कैन लुक फॉर ट्रेड बेसिकली, राइट. एंड हियर इज द इम्पोर्टेंट थिंग, हम लोग बहुत टाइम ये गलती करते हैं कि हम लोग कोई हाई टाइम फ्रेम लेवल हिट कर रहे हैं या फिर कोई भी लेवल हिट कर रहे हैं जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ से हम लोग सेटअप एंट्री मॉडल देखने का कोशिश करते हैं या ढूंढने का कोशिश करते हैं बेसिकली. काफी टाइम क्या होता है कि जब हम लोग कोई एक लेवल हिट करते हैं तो हम लोग ट्राई करते हैं एकदम बॉटम कैच करने का या फिर एकदम टॉप कैच करने का. यहाँ पे हम लोग को ये चीज समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग के पास ये काफी अच्छा एक रेंज है. मतलब ये हाई टाइम फ्रेम लेवल से ये डाउन लिक्विडिटी तक एक रेंज है एंड इस रेंज में हम लोग को अपना एंट्री मॉडल अगर मिलता है तो हम लोग को ट्रेड देखना है. हम लोग को बॉटम, हम लोग को टॉप कैच नहीं करना है. हम लोग को वेट करना है कि जो हम लोग का एंट्री मॉडल है, जो हम लोग का एंट्री मॉडल वो हम लोग को यहाँ पे मिले, यहाँ पे प्रेजेंट हो एंड वी कैन लुक फॉर द ट्रेड. ओके, क्योंकि हम लोग को ये अंडरस्टैंडिंग कि हाई टाइम फ्रेम लेवल है डाउन लिक्विडिटी, so we will look for the long setup and just we have to wait for the entry model. So don't try to catch bottom, don't try to catch top basically. Just wait for your entry model. अगर इस रेंज में from this low to this high अगर आपका entry model form होता है then look for trade, and अगर नहीं form होता है then move on, come next day basically, right? So let's say we moving higher, for example. Okay, let's say we hit this high time level and we're moving towards drawn liquidity. Don't get FOMO basically कि you missing the move. Market's already moving towards your drawn liquidity. अगर यहाँ से यहाँ तक अगर एंट्री मॉडल आपका नहीं है देन जस्ट वेट. ओके, जस्ट वेट, क्योंकि आपका डाउन लिक्विडिटी अब तक हिट नहीं हुआ है. हो सकता है कि नेक्स्ट लेग और मे बी इस लेग में आपका एंट्री मॉडल फॉर्म हो. एंड जो एंट्री मॉडल मैं देने वाला हूँ यू विल नो कि मैं किस एंट्री मॉडल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, सो लेट्स से मार्केट इज मूविंग फ्रॉम this low, this high, this low, this high. Basically it is creating, you can say higher high, higher low, whatever you want to say. Okay, so let's say we created this swing low here. Okay, we created this swing low here. Okay, at this point, so जो एंट्री मॉडल में डिस्कस करने वाला हूँ वो सिंपल कंसेप्ट है. वी वेट फॉर द रेड एंड देन वी वेट फॉर द डिस्प्लेसमेंट विथ फेयर वैल्यू गैप एंड देन वी लुक फॉर द एंट्री ऑन दैट फेयर वैल्यू गैप. Okay, so we know our high time level, we know our drawn liquidity.
now we have to wait for some liquidity rate and then displacement, जिसको काफी लोग टटल सूप भी बोलते हैं, right? So we wait for market to rate this swing low because we are looking for the bullish example. अगर bearish example वो देखते हैं तो we wait for the rate on swing high basically, right? So we wait for the rate. You can see we grab this low here, okay? We grab this low and then we displace higher with fair value gap, okay? So from this low to this high, once we grab this low, okay? Once we grab this swing low, we wait for market to move higher. We want to see strong displacement higher with the fair value gap, okay? अगर हम लोग यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो दैट्स बेसिकली वेरी गुड. I personally prefer market structure shift, okay, because let's say this is the last high, created the low, basically read previous low and then displace higher, so that's giving me high probability setup, basically high probability entry model, okay. So I wait for some rate, some liquidity rate, जैसे यहाँ पे swing low market यहाँ पे rate किया, right? Then I have to wait for the displacement with fair value gap and I look for market to retest to that fair value gap and then I look for the long entry, okay. अगर market structure shift है, अगर last high market break किया तो ज़्यादा अच्छा है. Personally I prefer candle close above this high basically, okay. So काफी सिंपल है. You have to understand first high time frame level. You have to know your drawn liquidity. Okay. So जो भी टाइम फ्रेम पे आप एंट्री लेते हो, चाहे वो 15 मिनट हो, 5 मिनट हो, 1 आवर हो, 4 आवर हो, ये you can apply this on any time frame. Okay. Either you can swing on 4 hour, 1 hour. Either you can look for intraday on 5 minute, 15 minute. Okay. But make sure you understand your high time frame bias. Okay. So I'll wait for market to retest to this fair value gap. I place my limit order and I'll target whatever drawn liquidity or whatever risk reward you want to trade basically. Now some of you might be thinking ki where you will put your stop loss, right? My stop loss will go below this low. Okay. Why below this low? Because I know कि market already grabbed this swing low and this is high resistance liquidity run basically, right? Those who are in my Udemy course, you know what I'm talking about, right? So we have this high resistance liquidity run because we know कि market already swept some low and displaced higher with fair value gap. So I know कि most probably chances है कि market अब इस low के नीचे नहीं आएगा. So if I'm entering here at this fair value gap, I'll place my stop loss below this swing low, okay? जो latest low रहेगा यहाँ पे. I'll place my stop below this low and I'll target whatever liquidity or whatever risk reward I want to trade basically. Okay. So I hope आप लोग को ये समझ में आ गया होगा. Just wait for the rate, wait for the displacement with market structure shift plus fair value gap, then look for the trade basically. Okay. So now let's see some example. Okay. So here you can see we are on Euro USD chart and this is weekly time frame. So as in starting I said first watch internal external video then come to this video. Okay. So we'll go step by step basically. Okay. So you can see we have this weekly internal range liquidity, weekly bullish fair value gap, and we have this external range liquidity resting, right? So we're looking for market to move from internal to external basically, right? So if you first tap internal range liquidity, we look for the bullish setup, right? So here you can see first we trade it lower, we tap this internal range liquidity, weekly internal range liquidity. Now we look for the long setup, right? Until we hit this external range liquidity, right? So we are right now on 4 hour time frame. You can see weekly internal range liquidity is holding, basically weekly bullish fair value gap market is holding here, right? And you can see we displacing higher right now. Okay. So we using time frame alignment, right? We coming from weekly to 4 hour and now from 4 hour we will go to 15-minute time frame, right? So on 4 hour time frame, you can see we have created this inverted fair value gap. We have this bullish imbalance here and one more bullish imbalance here. Okay. So now some of you might be thinking कि from which area we will look for the long setup to this 4 hour fair value gap or this 4 hour fair value gap. So यहाँ पे बस एक ये चीज समझना important है कि let's say the market ये 4 hour bullish fair value gap tap करेगा and 15 मिनट में अगर entry model present है तो then look for the entry at this fair value gap and let's say market ये लेवल हिट किया 4 आवर बुलिश फेयर वैल्यू गैप हिट किया एंड कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है लोअर, कोई भी एंट्री कंफर्मेशन नहीं है पहला फेयर वैल्यू गैप में, 4 आवर फेयर वैल्यू गैप में,
तो देन लुक फॉर द एंट्री एट दिस फेयर वैल्यू गैप इफ मार्केट गिव एंट्री। अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में एंट्री देगा ही नहीं तो व्हाई वी लुक फॉर द सेटअप बेसिकली, राइट? Definitely for the swing, you can place your limit here, you can put a stop loss, and you can target external liquidity on 4-hour time frame swing trading. But here we're going to discuss about intraday right now, okay? So here you can see we traded to this 4-hour bullish fair value gap. हम लोग का internal to external weekly में देख रहे थे, so we will look for the bullish setup. 4 hour में भी हम लोग bullish fair value gap form किए हैं. So now we'll go to 15 minute time frame and we'll see क्या 15 मिनट में कुछ entry model है कि नहीं है. So right now we are on 15-minute time frame, okay, and you can see this chart. So I am removing this drawing, okay, ताकि थोड़ा clear picture दिखे. So on 15-minute time frame, you can see we have this market maker buy model, okay. So remember we already tapped this 4-hour bullish fair value gap, okay, and on 15-minute you can see we have this market maker model, okay, because original consolidation accumulation then traded lower, okay. So now we know we hit 4-hour fair value gap. So if 15 मिनट में अगर हमको एंट्री मिलता है, जो एंट्री अभी हमने डिस्कस की एंट्री मॉडल वो मिलता है तो आई लुक फॉर द एंट्री, अदरवाइज आई अवॉइड, ओके. So pause this video and try to find, can you spot the entry model I said with you guys right now, okay. So I hope आप लोग ने pause किया होगा वीडियो एंड मार्क किया होगा खुद से लेवल, ओके. So remember again, we know our high time frame bias weekly internal to external. Then weekly से हम लोग 4-hour time frame आए, 4-hour time frame में हम लोग fair value gap hit किए. So 4 hour assembly हम लोग 15-minute time frame में देख रहे हैं. So on 15-minute time frame you can see we traded higher, we created this swing low, right? We traded higher and then you can see we read this low here, right? We read this low, will displace higher with the fair value gap, and we have this market structure shift, and you can see candle close above this high basically, okay. And this setup is forming inside what, London kill zone, okay. And note this point also, ये जो एंट्री मॉडल अगर आपके लंदन किल जोन या न्यूयॉर्क किल जोन में फॉर्म हो रहा है, दैट्स बेसिकली वेरी गुड एंड इट्स मेक्स मोर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, ओके. पर्सनली आई लाइक टू ट्रेड इनसाइड लंदन और न्यूयॉर्क किल जोन, ओके. So here you can see we have this rate, swing low rate, and then we wait for displacement. If we displace with fair value gap, now I'll place my limit or market order, whatever you want to do. Okay, and then you can look for the long setup. Okay, and here you can see market fill your fair value gap, and you can see how market traded very strongly upside and hit your this market maker model on 15-minute time frame. Okay, and you can see on 4-hour time frame also how market traded from this fair value gap. Okay. So let's see some second example. Okay, same USD CAD. We looking here right now. We looking for market to move from weekly internal range liquidity to external range liquidity basically. Okay. So from weekly we come to 4-hour time frame. On 4-hour time frame, you can see we have this original consolidation. Okay, market maker model. Okay. So on 4-hour time frame, you can see we have grabbed this equal low kind of. Okay, and you can see market displays higher after grabbing this equal low. Okay. सो बेसिकली जो ये इक्वल लो है यहाँ पे, ये बेसिकली प्रीवियस वीक जो लो यू कैन सी मार्केट ग्रैब किया, राइट. सो जो अभी स्टार्टिंग मैंने बोला कि आप 4 आवर चाहे स्विंग ट्रेड ले सकते हो या इंटर डे भी कर सकते हो. जो अभी एंट्री मॉडल हमने डिस्कस किए वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है. ओके, वी ऑलरेडी एट वीकली फेयर वैल्यू गैप, राइट. हम लोग वीकली फेयर वैल्यू गैप में थे, वीकली इंटरनल पे थे. सो कैन 4 आवर में वी रेड दिस लो, in this candle we read this low and then we displace higher with fair value gap. You can see fair value gap here at this area, fair value gap, and with market structure shift because this was the last lower high, right? So we have this market structure shift with fair value gap. So on swing purpose, you can look for the entry. You can place your limit here on the fair value gap, put your stop below the low, and you can target whatever high you want to do. Okay. So you can do swing also. Okay. But we're going to focus on intraday and we're going to look trade inside this fair value gap. Okay. So here you can see on 4 hour fair value gap. Okay, H4 fair value gap, you can see orange line. Okay, so we're going to jump on 15-minute time frame and we look for the entry model. Okay, so remember this 4-hour fair value gap. Okay, so this was the line.
orange line. So on 15-minute time frame, you can see we grab this low, we grab this low, okay? You can see we grab the low. Then we wait for what? We wait for the displacement with fair value gap. We grab the low, we grab this swing low, okay? At 4 hour fair value gap, we grab this low, and then we displace higher with fair value gap. Here you can see, and you can enter on the fair value gap, and you can target whatever risk reward or whatever drawn liquidity you have, okay? And you can see how beautifully it worked basically, okay? Now I'm coming back to this. Now some of you might be thinking कि ये यहाँ पे भी तो लो ग्रैब हुआ है basically. If you see this low, okay, ये लो मार्केट यहाँ पे भी तो ग्रैब किया है and then displace किया fair value gap. But here you can see when we read this low, okay, when we read this low and when we displace with fair value gap, we don't have market structure shift. क्योंकि ये लास्ट लोअर हाई था, ओके, जो भी हाई था, कैंडल क्लोज नहीं हुआ उसके ऊपर, जो कि मैं स्टार्टिंग में बोला. सेकेंड, वी डोंट हिट एनी की लेवल. हम लोग का जो 4 आवर फेयर वैल्यू गैप था वो यहाँ पे है. सो हम लोग इस टाइम कोई भी हाई टाइम फ्रेम लेवल पे नहीं थे, राइट? सो दिस एंट्री विल नॉट बी वैलिड फॉर मी, ओके? So here we grab this low, we grab this low, we grab this equal low, and we wait for basically displacement. And you can see this was the last lower high, right? And you can see candle का जो बॉडी है वो क्लोज हुआ है इस हाई के ऊपर विथ फेयर वैल्यू गैप. सो देन यू लुक फॉर द एंट्री एंड इफ यू सी द टाइम वी वाज इनसाइड द न्यूयॉर्क किल जोन, ओके, बिटवीन 8 to 12 a.m. न्यूयॉर्क लोकल टाइम, okay, you can see time here. So we was inside न्यूयॉर्क kill zone, okay, and this was a live trade. I uh, took a screenshot on May 7th, I guess, okay. सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा एंट्री मॉडल. एंड इस एंट्री मॉडल को पर्सनली आई से सिल्वर बुलेट एंट्री मॉडल, ओके. एंड इफ यू गाइस वांट टू लर्न इन मोर डेप्थ about ICT concept, how to do top-down analysis, and if you want to know more entry model, you can check my Udemy course. There I said everything about ICT foundation, ICT core concept, how to go from high time frame to lower time frame, how to do top-down analysis, how to swing trade, entry model, weekly breakdown, everything is there, okay. Thank you for watching this video. See you guys on the next video.